So I turned 23 this year and I wasn't excited about it. I just realized कि बचपन में 23-year-olds were adults. I'm not an adult. And neither are my friends. Hi everyone, welcome back to my channel. So it's Harry Potter's birthday and it's my birthday eve. And अभी सुबह के 4 बज रहे हैं and मैं भाई यहाँ पर PPT बना रही हूँ. So basically I have no plans for my birthday, but I don't know how, when, what, but it is. And just so you guys know कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक व्लॉग बनाने के लिए कि अभी सुबह 4:15 बजे उठ के मैं अपने फ़ोन की सारी ऐप्स डिलीट कर रही हूँ just so that I can make this vlog. And as the tradition goes, जिस भी दिन थोड़ा सही लगना होता है उसी दिन मुंह पे पिंपल आ जाता है भाई. Quite honestly मैंने नहीं सोचा था कि मेरा 23rd बर्थडे इतनी जल्दी आ जाएगा. I think because of COVID वो जो 2 साल गए हैं, I just always feel that I'm 2 years younger. So I am mentally just 21 years old. One very random thing that I love about my birthday is that it comes right after Harry Potter's birthday, and being a Potterhead, it just means a lot to me. And another thing that I love about my birthday is it always drizzles. Yes, I am a rain person. और फिर मैं जो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम से पहुंच गई थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर मेस में बैठी अपनी दोस्त और कॉलेज के प्रेसिडेंट से थोड़ा इग्नोर ही हो लेते हैं. एंड दिस इज़ मी रियलाइजिंग कि पीपीटी में अगर लैपटॉप लेके आना था तो लैपटॉप को चार्ज भी करके लाना था, एंड घर से तो ये सब काम हम लोग नहीं करके आते हैं. और ये मेरा क्लासमेट मेरी प्रेजेंटेशन में कमियां निकालते हुए तो मैंने सोचा कैमरा बंद ही कर देते हैं. गाइस ये मेरे फॉर्मल शूज हैं. तेरा पैंट भी फॉर्मल नहीं, जीन्स है. And here's a glimpse of me showcasing my summer internship presentation. And here's a glimpse of the professor pointing out my jeans and shoes which I was feeling so sly about. And this is how I wrapped up this humiliating presentation experience. Now back to my birthday. And like every other year, this year too I have a checklist for myself. And quite evidently उस checklist में मैगी छोड़ना तो नहीं है. But it does include prioritizing myself, loving myself more, accepting myself more, finding myself again, and most importantly, healing enough to be kind again. To find my way back to that self again who believed in both YOLO and solo. And to have a blast of a day every single day. Yes, just like this one. And जैसे my friends started showing up, मैंने सबको एक एक करके लाइन पे लगा दिया because for some silly reason I just wanted a lot of balloons. And mind you, the start of my birthday was just as chaotic as I would have wanted it to be. तो यहाँ 12 बज गए हैं, मेरा केक मेरे सामने रखा है एंड सडनली वी जस्ट रियलाइज कि हमारे पास उसे जलाने के लिए कुछ भी नहीं है. Somehow these guys arranged something and finally. लेकिन just when I blew my candles, I realized कि मेरे पास तो चाकू ही नहीं है. And quite honestly, it couldn't have been better. My birthday was just the right amount of chaotic. With the impromptu decor, impromptu cake smearing, impromptu midnight dinner outing, and the impromptu long drive to India Gate. And the night ended with Akshita dozing off in the car.